Welcome back to my channel, guys. I hope you people are getting benefits. First I will speak in Hindi, then I will speak in English, so that all type of audience can understand it properly, because the reason is that this is a very vast topic and this is really important for all of you to get your desired band scoring. So that's why I'm going to target both type of audience. But first I will speak in Hindi. So let's start, and then I will speak in English so that you can understand it properly. Let's start. एग्जाम्पल्स लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है, और हमें लगता है कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ही एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, बट एक्चुअली इसके अलावा भी काफ़ी मेथड्स हैं जो कि हमें कंटेक्स्ट के हिसाब से यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मेथड है जो कि परफेक्टली सूटेबल है, इट्स टोटली फाइन टू यूज़ इट, आप इसको कर सकते हो। बट इसके अलावा कुछ और मेथड्स होते हैं जो कि अब ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, तो उसके हिसाब से आपको जानकारी जरूरी है। और इसके अलावा ये रीडिंग में बहुत काम आती है, क्योंकि रीडिंग में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की होती है, तो उस टाइम आपको समझना जरूरी हो जाता है कि किस तरह से इनका मीनिंग क्या बन रहा है। तो इनको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फोर जो टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल रेंजिंग फ्रॉम लाइक 5.5 बैंड, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि कितने बैंड स्कोरिंग पॉसिबल है इनसे, और बीट, इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता जाऊंगा। सो अभी देखिए, नॉर्मल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड है। सो ये फर्स्ट मेथड है फोर्थ मेथड्स में से। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं a high rise has been seen in renewable energy to meet growing demands। सो एक इसमें एग्जांपल क्या है, एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी की है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में हम जो ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं, सो दिस इज द एग्जांपल दैट वी वांट टू पुट। सो क्या हो रहा है कि एनर्जी वाला ऐसे है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को हम कह रहे हैं कि उसकी जो इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो उसी को हम और कैसे लिख सकते हैं। ये नॉर्मल मेथड, दैट इज टोटली फाइन। जैसे कि सेकंड मेथड क्या है, वन एग्जांपल इज द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स। सो एक जो डिमांड है, एक एग्जांपल इज द डेवलपमेंट रिन्यूएबल एनर्जी टू मीट द, उसके अलावा देखिए क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज अ सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ मीटिंग डिमांड्स। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल पुट करना जरूरी होता है। एग्जांपल क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, बट उसको लिखने के मेथड इट कुड बी अ लॉट, सो काफी हो सकते हैं। अभी दूसरा जो मैंने अभी ये इसी की एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्ट्रेटेजिक गेम्स रिक्वायर प्लेयर्स टू बी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बी एबल टू डील विद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। सो क्या होता है, गेम्स के पॉजिटिव नेगेटिव टाइप कैसे है, कि वीडियो गेम्स खेलने के फायदे क्या हैं, तो इसमें हम स्पेसिफिकली क्या चीज मेंशन करना चाहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि मैंने व्हाइट में हाईलाइट किया। ऊपर स्ट्रेटेजिक गेम्स के बारे में बात की है, नीचे मैंने लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बात की है। तो ये हमारी एग्जांपल्स है, बट इसको प्रेजेंट करने के मेथड्स काफी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमा, स्ट्रेटेजिक गेम्स रिक्वायर प्लेयर्स टू बी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बी एबल टू डील विद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। So children who play these games can better their logical thinking and problem solving skills। अभी इसी को लिखने का associated वाला मेथड होता है। Children playing strategic games are easily associated with enhanced logical thinking and problem solving skills because this genre of games requires the player to be good at problem solving and to be able to deal with unexpected situations। तो हमारा जहाँ यहाँ पर जो भी फोकस था, मेन फोकस था एनहांस्ड लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर हम फोकस करना चाहते थे। और इसका मेथड कोई भी हो सकता है। हमें क्या लगता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल नहीं लिखते तो इसका मतलब हमने एग्जांपल प्रेजेंट की ही नहीं, बट एक्चुअली हमें पता नहीं लगता कि जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं उसमें काफ़ी एग्जांपल्स हम बिना फॉर एग्जांपल का यूज़ किए हुए भी लिख रहे होते हैं और हमें उसके बारे में पता नहीं चलता। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। एसोसिएटेड का मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ, एसोसिएट को एग्जांपल के साथ जोड़ सकते हैं। सो इट कैन बी इजीली एसोसिएटेड विथ, इट इज एसोसिएटेड विद, इसका मतलब है कि इसके साथ जोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ कॉजिंग कैंसर। सो अभी स्मोकिंग की एग्जांपल लिखी है हमने, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने फॉर एग्जांपल नहीं लिखा था, इसका मतलब ये नहीं कि हमने एग्जांपल पुट ही नहीं की। वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि दैट वी आर बीइंग स्मार्ट, तो इसको कहते हैं स्मार्ट डिसीजंस लेना, तो उसके हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। अभी देखिए रेंजिंग फ्रॉम क्या होता है। रेंजिंग फ्रॉम एक बहुत ही हाई बैंड स्कोरिंग स्ट्रक्चर है जिसको आप यूज कर सकते हो। यू कैन इजीली सी दिस इन योर रीडिंग पार्ट। रीडिंग में आमतौर पर देखा जाता है इसको, बट ये जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रक्चर है। अभी इसके बारे में आप पहले समझिए रेंजिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है। रेंजिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक पर्टिकुलर सिचुएशन, बहुत सारी चीजें यहाँ से शुरू होती हैं और वहां तक एंड होती हैं। जैसे कि
मैंने सेकंड एग्जांपल ज़्यादा टाटा की है, जो टाटा हमारी कंपनी है, तो आपने शायद इसकी एग्जांपल सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो मैं आपको बताता हूँ। तो कहते हैं ना कि टाटा सब कुछ बनाता है, एक समुद्री जहाज से लेकर, टैंक से लेकर, जेट से लेकर, एक सुई तक बनाता है। सो एक बहुत बड़े पॉइंट से लेकर एक छोटे पॉइंट तक, और बहुत सारी क्वालिटीज शुरू में लिखकर और बाद में आपको इसको एंड करना है। तो हम कहते हैं कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, कुकिंग कर सकता हूँ, क्लीनिंग। तो हम कहना हो ना, जब हमें कुकिंग से लेकर, क्लीनिंग से लेकर, वॉशिंग, कपड़े धोने तक का सब कुछ मैं कर सकता हूँ, तो हाउस होल्ड चोर्स की बात कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर वहां तक, सो आई कैन डू सो मेनी थिंग्स रेंजिंग फ्रॉम कुकिंग, फूड, क्लीनिंग हाउस टू वॉशिंग क्लोथ्स। तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब काफी चीजें कर सकता हूँ, फूड बनाना, क्लीनिंग करना और वॉशिंग क्लोथ्स। उसके बाद टाटा मेक सो मेनी थिंग्स, टाटा बहुत सारी चीजें बनाता है, कहाँ से, टैंक से लेकर, जेट से लेकर, एक छोटी सुई तक। तभी मैंने जानबूझकर यही वाली एग्जांपल दोबारा दिया ताकि आपको पता चल सके, वही गेम्स वाली एग्जांपल, कि इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है, तो उसको हम प्रेजेंट करेंगे कि वही मैंने नीचे लिखी है। तो हमारा जो मेन मोटिव था, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये हमारा मेन मोटिव था। अभी देखिए सेवरल स्किल्स, तो अभी रेंजिंग हम तब लगाएंगे जिसके बारे में आप बात करनी हो। आई कैन डू मैनी थिंग्स, अभी हम थिंग्स के ऊपर फोकस है, तो थिंग्स के बाद रेंजिंग लिखेंगे। ओके, आई कैन डू मैनी थिंग्स, थिंग्स के बाद, तो इसमें किस पर फोकस है, सेवरल स्किल्स। तो हमने स्किल्स के, जिस चीज के बारे में आपने टारगेट करना है, उसी के बारे में आप साथी के साथ बताओगे। तो जैसे कि स्किल्स के बारे में, जो भी चीज के बारे में आपने बतानी है, एग्जांपल्स देनी है, सेवरल स्किल्स, अभी आपने स्किल्स की एग्जांपल देनी है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू क्रिटिकल स्किल्स। सो रेंजिंग के साथ फ्रॉम के साथ टू लगाना जरूरी है, जैसे रेंजिंग फ्रॉम, उसके बाद मैंने टू क्रिटिकल थिंकिंग, ये लगाना बहुत जरूरी है, पीछे भी आप देख सकते हो, फ्रॉम टू, रेंजिंग फ्रॉम टैंक्स, जेट्स टू, इवन अ स्मॉल नीडल, अभी रेंजिंग फ्रॉम कुकिंग, फूड, क्लीनिंग हाउस टू वॉशिंग क्लोथ्स। सो अभी ये चीज जो इसका जो स्ट्रक्चर है, so you need to use to with ranging from, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए। तो हम जैसे भी हम बताना चाहते हैं, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। अभी लाइक का मेथड क्या है, लाइक एक, इट्स अ वेरी कॉमन मेथड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग दिस डेज, तो वो काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड है, इज एंड दिस इज ऑफन नॉट गुड टू यूज, सो ज्यादा अच्छा नहीं है इसको यूज करना, इट विल बी कंसिडर्ड इनफॉर्मल। इसकी बजाय लाइक, इन स्पीकिंग इट इज टोटली फाइन, बट इन केस ऑफ योर राइटिंग इट इज नॉट सूटेबल, तो मैं इसको आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। स्टिल हम यूज करते हैं, इट्स ओके, बट इफ यू कैन यूज अदर टाइप ऑफ मेथड्स सच एज इंस्टेड, सच एज और इंक्लूडिंग, सो दीज आर द थिंग्स। तो सच एज हो गया, इंक्लूडिंग हो गया, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये सेम ही लगेगा जैसे हमने पहले यूज किया सेवरल स्किल्स, उसके बाद ही बताना है साथ ही में इंक्लूडिंग और सच एज, इंक्लूडिंग और सच एज ऐसे नहीं लिखना, मेरे कहने के मतलब इन दोनों में से कोई एक लिखना है, कभी कभार स्टूडेंट दोनों भी लिख देते हैं, वो दिक्कत हो जाती है। तो इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या तो आप ऐसे लिखोगे या फिर लिखोगे सच एज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रेंजिंग के साथ फ्रॉम से टू लगता था, बट इन दिस केस एंड लगेगा, सो इसका ध्यान रखिए। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग लाइक, बट आप इंक्लूडिंग और सच एज को आसानी से यूज कर सकते हो। बीट का क्या मतलब होता है, बीट का मतलब होता है चाहे ये चाहे वो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, अगर ये चाहे वो, ओके। सो दोनों चीजों को आप हाईलाइट करना चाहते हो। एनी टाइप ऑफ फूड आइटम, किसी भी तरह की फूड आइटम, चाहे वो हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो, कैन कॉज हेल्थ इश्यूज इफ कंज्यूम्ड इन एक्सेस। अगर चाहे अच्छी चीज भी है ना, वो भी अगर आप कंज्यूम एक्सेस में करोगे, दैट इज गोइंग टू कॉज इश्यूज। सेम टाइप ऑफ लॉ रूल्स शुड बी अप्लाइड टू एवरीवन, सभी तरह के रूल्स अप्लाई करने चाहिए, जो लॉ है वो सभी के ऊपर बराबर होने चाहिए, बी इट पुअर और रिच, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो इसकी तरह से हम यूज कर सकते हैं, बीट का यूज कर सकते हो। तो ये आपको रीडिंग में भी नॉर्मली मिल सकता है, आपको अभी आप ध्यान में रखोगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो ये आपके जो मेथड से, आप इसको 3-4 बार देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने यूज करना है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल लिखने से कुछ चीज एग्जाम्पल नहीं होती, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको आपने कवर करना होता है। So this is the end of this video for the Hindi version, but now I'm going to talk about the whole video again in English. So let's start. Basically what happens is that there are so many things that we need to get right in order to get the scoring of band 7 or more than that, and putting examples is one of the best ways through which you can improve your scoring, and there are 4 methods.
what happens usually is that students think that if they are not writing for example, then they will not be considered that they are using an example. But in reality, there are so many variables, so many methods that we usually use, that we can use, that can potentially help you to boost your scoring. And so these are the methods that we are going to use. So the first one is for example. So this is just a very good thing. This is a perfect method. You can use it. So it's not like that using for example is a bad thing. It is perfectly fine as long as you're writing relevant to the essay. So make sure that you're writing relevant to the essay, and by using for example it is totally fine. So there are three ways you can write it. Basically what we are doing here is that we are just changing the sentence formation just to make it feel like it is more complex, but at the same time it is totally understandable and it is totally clear. For example, a high rise has been seen in renewable energy to meet growing demands. But in the second case, what we are writing is one example is the development of renewable energy to meet growing demands. So again, we are just using one example. And in the third case, what we can write is that development of renewable energy is a successful example of meeting demands. So we are not just limited to, for example, to illustrate for illustration. So this is not what we are only limited to. We can just improve our sentence structure and can potentially get higher band scoring by using these type of methodology. More example. For example, in this case, we want to specifically highlight strategic games and their benefits, for example, are logical thinking and problem solving skills. But in the second case, after or, you can see that in the letters that I have written in white, strategic based games are easily associated. This is also another form of writing example. In first case, what we are saying is, for example, strategic games require players to be good at problem solving and be able to deal with unexpected situations. So children who play these games can better their logical thinking and problem solving skills. But there is another way to write the same thing by changing the sentence formation or sentence structure. For example, children playing strategy based games are easily associated. Associate means we are linking that. For example, what we say is that smoking can be easily associated with cancer, or can easily be associated with different type of lung diseases. So that's what we are saying is that we are giving the examples of deadly causes of smoking. But in this case, we are not using, for example, we are using associated. So this is also another method that we can use. And now the second method is ranging from. It is commonly used in your reading, so make sure to understand it properly because it is also going to be very helpful to all of you, especially in case of your reading, because your understanding will improve and you will be able to comprehend better. So I can do many things, but before using ranging from, what we need to understand is that how to use it and what exactly is the meaning of ranging from. So for example, there are 10 qualities that you want to highlight, but writing 10 qualities is going to be too much. So you just want to mention the initial qualities and the ending quality. For example, let's suppose that in this case, we want to highlight 10 qualities, and instead of writing all of these, what we can do is we can just write first 2 or 3 qualities and then we can just write the last quality. In this way we are just going to cover, like we can say that it starts from this, from these beginning qualities, and it ends with this. For example, let's suppose that you are able to do so many household chores, but you want to just highlight some of the important ones or some of the starting ones and the ending ones. I can do so many things ranging from cooking food, cleaning house to washing clothes. And if you want to add more, you can also do that. For example, ranging from cooking food, cleaning house, managing money, managing time to washing clothes. So it's up to you how many you want to write, but this is a great example that how you can use it. Tata is a company in India that makes almost every sort of product. So that's how we can use it. So there are like thousands of products that Tata makes, but it's totally impossible to write all those sentences. Otherwise, we would just be out of the topic. And that's how we use ranging. So we can just highlight some of the initial ones that are really big. For example, making tanks, jets, or submarines. These things are really huge. And then at the end, we can just write a very small thing. So that is going to show that they are capable of making very big things, and then they just are also able to make small things. So basically what we are saying here is that we are covering every possible thing, every possible thing of every possible size. Okay.
And I've used the same example to represent how to use ranging. But make sure to keep one thing in mind. In last case, we said that I can do so many things, and we wanted to specifically highlight things. So after things, we are going to use ranging. And similarly, in this case, several skills. What type of skills? So this is where we are going to use ranging. So you need to be very aware that what you are going to highlight, and you are going to use ranging from after that particular word that you are going to target. Okay, for example, smoking can lead to several types of cancers, comma, ranging from lung cancer. I think it just causes lung cancer. I don't know about that. So you can also say, let's think about another example. For example, unhealthy type of food items can cause several type of diseases ranging from obesity, type 2 diabetes, to several type of other deadly diseases. So this is how you are going to use. So as you can see that in this case, I used ranging from specifically after diseases because I wanted to elaborate that what type of diseases, what type of things. So make sure to use ranging from after the word that you are going to specifically highlight. And now we are going to talk about like. Like is informal and is often not good to use. It's really considered informal, so I would not recommend all of you to use it. Still, I know we use it, but I would still recommend not to use it. Instead of using this, we can use such as including, and it is going to be used the same way that we used ranging from. Several skills, and we want to highlight what type of skills. We said several skills, but what type of skills? This is what we call explanation, such as decision making, problem solving, critical thinking. So after that particular word that you are going to stress, you are going to write all these things. Be it. Now we are going to talk about be it. Let's suppose that you have two options and you want to say that both of the options are really important to me. I don't care which option you're going to present. I'm going to take both of them. I will just take it, be it this or that. I will just take it. So that's how we are going to use it. Any type of food item, be it healthy or unhealthy. So it doesn't matter whether the thing is healthy. It doesn't also matter whether the thing is unhealthy. Can cause health issues if consumed in excess. Same type of rules should be applied to everyone. I don't care whether the person is poor, whether the person is rich, but rules should be same. It's not like that if a person is rich, he is going to pay a lot of money just because the fact that he is rich. So it's not like that. And also, it should just be applicable to everyone, and it should be the same. So in this way, you are able to use these examples. Examples are really important for our essays, but also it is highly important for all of you to know that how you can use it. So I hope this video was helpful to all of you and I was able to present you something. I hope this will potentially help you to get better scoring. Thanks all. I hope this video was helpful to all of you.